minus dm by dt into dt, students. This dt I'm multiplying over here, minus g into dt, students. So dt and dt will get cancelled over here. So now what's the formula for velocity? dv is equal to vr by m minus dm. So can I say dv is equal to minus vr dm by m minus g into dt. Now suppose if I ask you to find out the velocity. Students, this was my question. Find out the velocity of the rocket at time t and the mass of the rocket is m. है ना? यानी कुछ टाइम के बाद में फ्यूल बर्न होगा. So now what exactly the mass of the rocket is m. Initially, how much exactly the mass of the rocket was m0. So what should I go for? So let us go for integration. Students, try to look at the limits. Try to look at the limits. अगर मैं बोलूं, I need to find out velocity. So let us say u is the initial velocity. Initial time 0 seconds. Yani we got limits of time, we got limits of speed also. After time t, what is the velocity will be v? What is the mass is m? Initial is m0. So students, if I happen to go for integration, integrate both the expressions. तो यहाँ पे क्या है students? What exactly is integration of here? Integration of dv, where initial is u, final is v. When I speak about integration of dv, that means integration of velocity we consider. Change in velocity, so it's fine. Initial is v, u and final is v. When initial is u and final is v, what exactly mass? Initially, when the speed was u, when you started launching it, students, when you started launching the rocket, at that instant, what exactly the mass of the rocket is? It's capital M0. When it reached to V, students, what exactly the mass was? Capital M. The fuel was burned. And this burning of fuel took place in what? In time t. Let us say initially the time was 0 seconds and then the time was t. 0 seconds and then the time was t. Students, did you get the limits and all? Now, this is your integration part of it. Now, this part should be very clear with the students. Students, what is integration of dx, x? What is integration of du, u? What is integration of dv, v? So I'll put forward v, where I'm going to put forward its initial limit and final limit. Negative sign outside. I told you VR. What does VR stands for? The relative velocity of the gas which is made to escape to the nozzles. जब rocket propel करता है तो students यहाँ पे छोटे nozzles होते हैं. Are you getting it? Area is very small of the nozzles. The gas is made to escape to that smaller area. So the tremendous amount of pressure. Pressure is equal to force per unit area. Are you getting it? So a large amount of force is exerted. So what does VR stands for? The relative velocity of gas with respect to rocket. And VR all the time remains constant. VR all the time remains constant. Since constant terms cannot be integrated, तो मैं उसको VR निकाल दूंगा बाहर. बचा क्या मेरा अंदर? Sir, integration of dm by m. So what is integration of dx by x? Integration of du by u. Simply ln of u, ln of x over here क्या होगा? ln m. Initial क्या है? m0. Final m minus gravitational acceleration is constant. What is integration of dx x? Integration of du u. Integration of dv is v. So integration of dt will be t. Lower limit 0, upper limit is this. Now can you get a mathematical relation? Substitute the limits, upper limit minus lower limit, because these are all definite integrals, minus relative velocity, ln m, substituting upper limit and lower limit. So ln of capital M. What does capital M stands for, students? Mass of rocket where the fuel is burned minus ln m0, the initial mass of the rocket, including rocket as well as the fuel, minus g into upper limit t minus 0. Friends, is the question clear to all of you now? Now can you get an answer? Yes, so v is equal to minus यहाँ पे आएगा तो u हो जाएगा. Friends, ये माइनस मैं बाहर निकाल देता हूँ और इंटरचेंज करता हूँ. माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस. ये प्लस में लिखूंगा, वी आर लिखता हूँ. स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा ln m0 minus ln m minus gt. Now this part everybody should know how to solve.
Students, if I say ln m0 minus ln m will be equal to what? Ln m0 by m ln m0 by m. Can you write down this in terms of exponential, students? I have told you this in calculus already. Ln को exponential form में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? Log of m0 by m to the base of e. उसको फिर natural logarithms में करते हैं to the base of 10 तो कैसे लिखोगे? 2.303 log of m0 by m to the base of 10. Hope that part is very, very clear to solve such questions. Now this becomes your final velocity after time t. अगर सपोज मैंने बोला कि now find out the velocity, students, अगर मैंने क्वेश्चन में ये थ्रो किया find out the velocity of the rocket in outer space. Outer space, that means there is no effect of gravity, so g becomes 0. Students, gravitational acceleration 0 हो जाता है उस टाइम पे. There is no acceleration possessed. If gravity is ignored, students, अगर gravity, अगर क्वेश्चन आया जहाँ पे gravity ignore किया गया है तो g को 0 डाल दो ना, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा? Are you getting it? Initial velocity तो 0 है, u is considered to be 0 initially. If in case अगर तुम्हें प्रॉब्लम में u 0 दिया है initial, तो u 0 डाल दो. अगर तुम्हारे पास में है u तो you can put it. तो अगर मैंने initial velocity 0 ले लिया, ये g 0 ले लिया, तो what exactly v will be equal to this? Simply. Is this part clear to all of you all? Friends, is it clear? Yes, sir. That only one person is replying. What about the rest of them? Nishant, are you there, Nishant? Nishant, yesterday you were absent. Yes, sir. Still you are out of India itself only? Nishant? What's up? Still you are out of India? Yes, sir. And did you give the exams on Sunday, the major test? Yes, You sir. got a mark? How much did you score? I didn't check the marks yet. I'll be checking today. Okay. Just after class. Is this clear? Whatever I did with you, is it clear? Yeah. Clear. Did you do it, this one earlier in laws of motion? Nishant, proportion of rocket किया है laws of motion में? Wait 1 minute, sir. No. Okay, fine. So, Yeah. so in weight, the m is mass of rocket, right? Yes, M. Yes. Friends, अगर ये देखो ये कभी यूज करना मालूम है? ये small m कभी अगर suppose तुम्हें सिर्फ acceleration पूछा है, please pay attention, students. Okay. When you go for velocity, students, in that time only you need to go for integration, students, because nowhere I'm getting velocity in this case. So when I try to go for acceleration as differentiation of velocity with respect to time, and if I put dt on this side, then I need to go for integration. Then I'll go for velocity at that instant. So for that you consider. Like when you go for direct relation of acceleration, take this m as your total mass initial force net. ये जो m है ये total mass है. ये upthrust का formula हुआ. हाँ, ये जो dm by dt है ये कौन सा है? This is the mass of fuel which is getting burned. Students, please keep in mind, this is when I gave it to you, I told you it's a rate of ejection of the gas.
ये rate of ejection of gas मैंने बोला था, लेकिन that ejection of gas is exactly equal to the amount of fuel which is burnt. So one can also say dm by dt is the mass of fuel which is burned per unit time that produces gas, and that gas is ejected from the small nozzles vertically downward with tremendous pressure. That becomes your action. To every action, there is an equal and opposite reaction, equal and opposite reaction, equal and magnitude opposite direction. And that reaction force is called as the upthrust. The weight of the rocket is m into g. This m stands for the total mass. The rocket ka mass as well as fuel ka mass mila ke. Agreed, students? Now, suppose if we just look at this part, students, I'm just trying to take this part, okay? How to tackle with these kind of things. But students, you need to go for natural logarithms also. I'm just going to erase this. Ye part mein erase kara, students. Students, when you speak about it, it's ln m0 minus ln m. Okay, it's a difference. So now when I speak about, can I write on this in terms of logarithmic function, students, ln m0 in terms of logarithm? तो logarithmic function में कैसे लिखोगे इसको? अभी मैं सिर्फ ये part solve कर रहा हूँ, students. सिर्फ ये part. इसको तुम कैसे solve करोगे? I can write on this as log of m0 to the base of e minus log of m to the base of e. So ये जो है तुम्हारा logarithmic function is taking place to the base of e, students. I want to write on this in terms of natural logarithm. So how do you go about this? How do you go about with this? So you'll write on this as 2.303 log of m0 to the base of 10 minus 2.303 log of m to the base of 10. Since this is a fraction sign, students, can I remove 2.303 outside? Why not? Bracket में क्या होगा? Log of m0 by m to the base of 10. I can split up this and I can put in this manner also. ये हुआ तुम्हारा. जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. Hope this part is clear to all of you all. Can I erase this now, students? Yes, Can I sir. erase it? Okay. Sorry, students. Now I'm giving you a question, students. Just try to look into this, okay? We'll solve it simultaneously, students. We'll solve together, and then we'll be going for some more questions onto that, students. Okay, unsolved problems, students. Read answers, students. Question ये है कि suppose अगर मैंने कोई rocket को propel किया, students, a rocket is set for vertical firing, students, and its weight is 50 kilograms. Students, a rocket is made to fire vertically. Weight is 50 kilogram, contains 450 kilograms of fuel. तो मुझे बताओ students, 50 किलोग्राम क्या होगा, 450 grams क्या होगा? And what is capital M? What is M0? I repeat, a rocket set for vertical,
firing weighs 50 kilogram and contains 450 kilograms of fuel. So what is M0? Students? So M0 is 450 plus 50. Absolutely correct. Yani 50 plus 450, agreed, and that will be equal to 500 kilograms. Is that clear? What exactly the mass of rocket? Mass of rocket, how much is that given to you? Capital M kitna diya hai? 50 kilogram without the fuel inside it. How much is the mass of fuel, students? How much is the mass of fuel? Mass of fuel is 450 kilogram. Agreed, this much is given to you. I'll read it further, students. It can have a maximum exhaust velocity. Students, the rocket has a maximum exhaust velocity of 2 kilometers per second. तो मुझे बताओ 2 kilometers per second क्या है? It has a maximum exhaust velocity of 2 meters per second. Sorry, 2 kilometers per second. What is that 2 kilometers per second? So VR. Absolutely correct. Relative velocity. It seems that only one person is speaking it out. VR, students, that is 5 kilometers second inverse, and that all the time remains constant. Are you getting it? So that's a velocity we consider. What should be the minimum rate of fuel consumption? अभी क्या पूछा students? What should be the minimum rate? मुझे बताओ, what exactly mean by minimum rate of fuel consumption? What is a variable? Minimum rate of fuel consumption. Can you tell me what exactly the variable used for that will be? dm by dt. Very good. Students, minimum rate of fuel consumption वो होगा dm by dt, small m, which is actually equal to what, students? Rate of ejected gas. ये है ejected gas. उसी का फ्यूल बर्न होगा, वो गैस में इजेक्ट होगा और वो नेगेटिव साइन में आएगा. तुम्हें dm by dt पूछा गया है स्टूडेंट्स. वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, a rocket of mass 50 kilograms having fuel 450 kilograms is made to fire vertically upwards. The relative velocity of the gas with respect to rocket is 5 kilometers per second. Find the minimum rate of fuel consumption dm by dt. Two cases asked. पहला केस, हम पहला केस लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट केस, मुझे dm by dt पूछा है कभी fuel consumption to just lift it off from the launching pad. यानी पहला केस में just to lift it from launching pad. यानी स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे dm by dt चाहिए कभी जब भी वो जस्ट लिफ्ट होता है. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, जब ये रॉकेट जस्ट लिफ्ट होगा, जब ये रॉकेट जस्ट लिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, तो कैन यू टेल मी what exactly I need to find out in terms of it? What happens in this case? Just lift होगा तो can I say your initial velocity will be equal to how much? 0, है ना? Just lift. The initial time also I'll consider will be 0. मुझे चाहिए dm by dt just to lift it. स्टूडेंट्स, जब भी रॉकेट को लिफ्ट करना होता है, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, जब भी रॉकेट को जस्ट लिफ्ट करना होता है फ्रॉम द ग्राउंड, कैन आई से द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इट टू लिफ्ट, the force required for it to lift called as the upthrust, and this is called as the weight. है ना? ये क्या है? weight. अगर मुझे just lift कराना है तो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी माय फोर्स ऑफ upthrust should be greater than the weight of the rocket. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
If I want it to just lift, so my upthrust should be. But should I go for greater than or should I go for greater than or equal to? Greater than or equal to? यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी पूछा गया है ना तुम्हें, फाइंड आउट डीएम बाई डीटी जस्ट टू लिफ्ट इट, यानी यहाँ पे तुम्हें डीएम बाई डीटी मिलेगा ना स्टूडेंट्स. व्हाट एक्जैक्टली योर अपथ्रस्ट आई कैन कंसीडर विल बी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट यू हैव गॉट इट स्टूडेंट्स? सर अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तो मुझे पता है, वी आर माइनस डीएम बाई डीटी. कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? है ना? इज इक्वल टू व्हाट? वेट. व्हाट इज वेट? यहाँ पे वेट को तुम क्या करोगे? Students, what exactly weight will you consider? Will you take it as capital M or will you take it as M0? Students, weight को क्या लोगे? Will you go for M? Will you go for M0? M0 into G. क्या ये clear हुआ students? Students, are you getting it? Just to find out the rate of fuel consumption, how much the fuel has been burned just to lift it. So your force of upthrust is greater than the weight of the liquid. Can I get dm by dt from here? Yes. What is dm by dt? So dm by dt will be equal to m0g by vr, and that is a negative sign shows it's ejected. Can you solve and get me the answer for the students? Students, इसको solve करके can you get an answer? Which is equal to minus how much is m0? 500. How much is g? 9.8. How much is the relative velocity we consider? Is it 5 kilometers per second, students? Oh, very sorry. Relative velocity is given as 2 kilometers per second, students. This is 2. And 1 kilometer is 1000 meters, students. 2 into 10 raised to 3 meter per second. Can you solve and get the answer of dm by dt? The answer for the students for dm by dt will be getting it as minus 2.45 kilograms second inverse. Negative sign shows it's ejected. This particular fuel which is burned is ejected in the form of a gas. Students, क्या ये clear हुआ सबको? The first part, everybody. Then we'll move further ahead. Yes, sir. Clear. These the rest of the students inside the group. Swapnil, what about you? Prayag, Pratham, Mayur, Mayank. Yes, sir. Fine. Okay, students, ये तुम्हें मिल गया. अभी मैं दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ. Students, now I'm putting the second question. Students, question पूछा है, second one क्या पूछा है? Now you have to find out the answer, students. Okay, ये first आया है to lift. The second question पूछा है to give it an acceleration of 20 meter per second. Students, I need to find out. That's also, second question ये पूछा है find dm by dt. So that the rocket has an acceleration, net acceleration of how much? 20 meter per second. अभी बताओ, क्या तुम ये solve कर सकते हो? हाँ students, यानी जब भी तुम्हें dm by dt पूछा है कभी, when the acceleration, of course, और mass कम होगा ना students. ये तो initial है. Initial 2.4 kilograms of fuel is burnt and that is ejected in form of gas. Now find out dm by dt when the rocket is undergoing having an acceleration of 20. Can you use the formula for net acceleration? Students, chalo, use the formula for net acceleration. Get me the answer for this. Let's see how many people are getting the answer. Net acceleration का formula क्या होगा students? Upthrust minus weight upon mass. Students को याद आ रहा है? यानी तुम्हारा formula क्या था? Relative velocity upon m. अभी देखो यहाँ पे m तुम क्या लिखोगे? वहां पे मुझे इंटीग्रेशन करना था, वहां पे मैंने स्मॉल m लिखा था.
स्टूडेंट्स यहाँ पे m0 आ जाएगा, द टोटल वेट इनटू ब्रैकेट माइनस dm by dt, कुछ याद आ रहा है? माइनस, students, we got it in terms of what? M into G, and M was getting cancelled. So what exactly considered will be simply G. The M was getting cancelled over here. मुझे क्या चाहिए? dm by dt चाहिए, students. So can I say I want to find out dm by dt? यानी I want to find out the rate of gas ejected. यानी नेगेटिव साइड पूरा यहाँ पे ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये देखो G यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट्स. फिर देखो G यहाँ पे आ जाएगा. So can I say this will be A plus G? Agreed? ये m0 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा upon relative velocity. So how much is the acceleration given to you? रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना दिया है? 20 दिया है. G कितना दिया है? 9.8 दिया है ना स्टूडेंट्स? तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो 20 plus 9.8, what exactly the total mass of the rocket is given to you as 500 upon what is the relative velocity is given to you? So this is 2 kilometers per second. So can I say this is 2000? Can I find out dm by dt which is ejected? Students, क्या ये clear हुआ? Can you find a dm by dt which is ejected? And students, when you're solving this, you'll be getting the answer as 7.45. This answer is 7.45 kilogram per second. Are the two questions clear to all of you? Yes, sir. Now, students, the last question. In this only, students, I'm giving you all information in this. इसके बाद में जब भी तुम आंसर प्रॉब्लम करोगे तो तुम्हें खुद आना चाहिए. Don't expect me to help you out for that. Whatever you want to ask me right now. So this is a direct relation to find out dm by dt and dm by dt for an acceleration this. Now, if I happen to go for the third part of it, students, the third part of the question. I'm going to erase the part which is given as a data, students. Okay, the third part of the question speaks about what? Since question ये पूछा है, the last part. Since पूछा है, what will be the speed of the rocket? अभी देखो V पूछा है, students. What will be the speed of the rocket when the rate of consumption of fuel is? And students, अभी यहाँ पे पूछा, what is the speed of the rocket when the rate of consumption of fuel is 10 kilograms per second? चलो, ये क्या है? हाँ, students. When the rate of consumption of fuel is 10 kilograms per second. So बचा, what is 10 kilogram per second? क्या दिया है तुम्हें यहाँ पे? What exactly that is given to you? Yeah, exactly. Students, fuel consumption, fuel. $10 kilogram per second means, can I see it's given to you as dm by dt? And that much amount of gas is burnt and it's getting ejected. So तुम्हें पूछा, students, velocity when the fuel consumption is 10 kilograms per second. तुम्हें पूछा है v, जब भी कंजम्पशन का रेट ये है, अभी क्या करोगे? हाँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. अगर तुम्हें फ्यूल कंजम्पशन दिया है कि 1 सेकंड में 10 किलोग्राम का फ्यूल बर्न होता है, टोटल फ्यूल कितना था स्टूडेंट्स? जब भी हमने शुरुआत में रॉकेट को लॉन्च किया तो व्हाट एक्जैक्टली द टोटल फ्यूल इनसाइड वाज? सर 450 किलोग्राम्स. तो स्टूडेंट्स ये 400, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, इट्स एट द एंड ऑफ टाइम t. Students, when the entire fuel is getting burnt.
तो कितने टाइम में वो फ्यूल बर्न होगा स्टूडेंट्स? अगर अगर 10 किलोग्राम एक सेकंड में बर्न हो रहा है, 10 किलोग्राम फ्यूल अगर एक सेकंड में बर्न हो रहा है, था कितना? 450 किलोग्राम, 450 किलोग्राम। तो इसको कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स? क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन में मुझे टी दिया गया था, हमारे इक्वेशन में क्या आ रहा था? जीटी आ रहा था एंड में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? The formula was with minus gt in that case. So I need to find out time. So what exactly the time will be? So you see the time will be equal to 450 divided by 10. So what's my answer? So time taken for the fuel to burn is 45 seconds. यानी students 45 seconds में 450 किलोग्राम फ्यूल बर्न हो जाता है। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी भी होगी। अगर उसकी वेलोसिटी भी है तो v का फॉर्मूला क्या है? So v का फॉर्मूला will be u, if you recollect, minus gt, तो मैं पीछे लिखता था, मैंने r लिख दिया, प्लस relative velocity of the gas ejected with respect to rocket. ये क्या है? ln of m0 by m. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्लियर हुआ अभी? Yes, sir. स्टूडेंट रॉकेट इनिशियली उन्होंने बोला नहीं कि दे हैवंट गिवन इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स मैं यू को क्या लूंगा? 0 लूंगा। जी को मैं क्या लूंगा? 9.8। सो v is equal to minus 9.8 into t 45 plus what is relative velocity is given to me as? So what is the relative velocity was given to me as? 2 into 10 to 3. ln m0 by m. m0 क्या होगा और m क्या होगा? सर m0 will be the total mass. ये क्या है? सिर्फ मास ऑफ रॉकेट। कितना था ये स्टूडेंट्स? 50 ना? ये 50। यस, मास ऑफ रॉकेट वाज 50, फ्यूल वाज 450, टोटल वाज 500। नाउ कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ वी स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. मैं लेट आया तो सर वो मेरे फोन में कल से प्रॉब्लम हो रहा है, मींस सडनली स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है। अच्छा। What about the rest of the students? Mayank, Mayur, Swapnil? Yes, sir. Clear. ओके। ना अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहोगे स्टूडेंट, आंसर देना भी इसको लॉग से कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये पार्ट में थोड़ा सा और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्लियर हुआ हाउ टू लॉन्च आफ्टर शुड बी ग्रेटर देन वेट। एक्सेलरेशन को निकालने के लिए डीएम बाई dt, तो यहाँ पे जो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया m0, ये टोटल मास आ गया, ये सब ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। ओके, डोंट फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स। Now students, when you're solving this part of it, तो तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हें velocity is equal to what? तो इस वेलोसिटी को अगर ये माइनस 9 पॉइंट, सपोज अगर मैं इसको 10 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये माइनस 450 हो जाएगा इंटू 2, सॉरी प्लस, वेरी सॉरी, प्लस प्लस साइन है, 2 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट्स, ये है ln m0 by m। तो कैन आई से दिस इज ln m0 by m, दैट मीन्स 500, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ln 10 हो जाएगा। एग्रीड? so that will be equal to minus 450 plus 2 into 10⁻³ स्टूडेंट्स, अभी इसको लॉग में लिखना है, तो कहना है 2.303 log of 10 to the base of 10 students, log of 10 to the base of 10 is always 1।
स्टूडेंट्स log of a particular number to the same base is always equal to 1. तो अब ये क्या होगा, -450 प्लस ये कितना होगा 2000 इंटू 2.303. इसको मल्टीप्लाई करो, उसको तुम 450 से सब्ट्रैक्ट करो, दैट बिकम्स द वेलोसिटी. इसको तुम किलोमीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट रॉकेट है ना, रॉकेट का वेलोसिटी, प्रोपल्शन रॉकेट वेलोसिटी को हम किलोमीटर पर सेकेंड में बता सकते हैं स्टूडेंट्स. गेटिंग इट? ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा कितना होगा, 23 to 2, 3 to the 6, 2 to the 4, 46 के आसपास आएगा, और ये 450 है स्टूडेंट्स. Getting it? Subtract it and get the answer accordingly. And that answer will be in kilometers per second. हाँ, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे अगर रेशियो आता है, सपोज अगर सपोज मुझे मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. अगर मुझे कोई दूसरा वेरिएबल आता है स्टूडेंट्स, ln मुझे मिला 3/2, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो स्टूडेंट्स ये हो जाता है तुम्हारा 2.303 log of 3/2. So log of 3 minus log of 2 to the base of 10. ऐसा होगा स्टूडेंट्स. ये सब ध्यान में रखना. यानी तुम्हें नेचुरल लॉगरिथम में log of 3 की वैल्यू लेनी है, वो डालना है, माइनस log of 2 लेना है, वो वैल्यू डालना है, सबट्रैक्ट करना है, और जो आंसर आएगा फिर इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स जब भी स्टूडेंट्स इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, रॉकेट प्रोपल्शन, और ये स्टूडेंट्स आते हैं जेई के लिए इंटीजर टाइप में स्टूडेंट्स, और यूनिट्स होते हैं इंटीजर्स में, यानी तुम्हें वेलोसिटी भी देंगे, दैट इज they'll give it to you in integers, 4 kilometers per second, 10 kilometers per second, यूनिट्स देंगे एट द एंड ऑफ इट. एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम द आंसर विल बी इन इंटीजर, और यूनिट दिया होगा किलोमीटर पर सेकंड. स्टूडेंट्स इसका आंसर 4 में आएगा, 4 पॉइंट समथिंग. लेकिन अगर परफेक्ट इंटीजर मिलता है तो यू कैन गेट द आंसर अकॉर्डिंगली. लेकिन उस टाइम पे तुम्हें log of 3, यानी स्टूडेंट्स log of 2, log of 3, log of 4, log of 5. यस सर, वो -450 कैसे आया सर? -9.8 इंटू 45 करे तो -441 आना चाहिए ना आंसर. अरे हाँ मेरे भाई, मैंने उसको 10 ले लिया स्टूडेंट्स, मैंने इसको 10 लिया, 441 है बस. सबने तो खुश हो जाओ बस. 9.8 है, मैंने 10 लिया मेरे भाई कैलकुलेशन के हिसाब से. ओके ओके. स्वप्निल स्वप्निल सॉरी स्वप्निल क्या, स्मिथ 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 क्लियर हुआ? यस सर. हाँ या ना? यस सर, क्लियर हुआ. अच्छा, ये था 9.8 ही, तुम सॉल्व करे तो 9.8 से ही, लेकिन जब एमसीक्यूज के टाइम पे मैंने लिया तो उसको मैंने 10 पकड़ लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए. ओके ओके. यस सर. Now students, I want you to go for page number 121 students. Everyone look at page number 121 students. I want to solve the first one, second one, and third one. 3 questions are given on to propulsion of rockets. Solve it right now. So it's page number 121. Since given to you that is a rocket of mass 20 kilograms has 180 kilograms fuel. So students, I'll just give you your M is given to you as 20 kilograms, that is mass of rocket. Students, your F0 is mass of rocket plus mass of fuel, so that becomes 200 kilogram. ये सब ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. ओके, ये मास ऑफ द रॉकेट है, यानी विदाउट फ्यूल, और ये टोटल मास.
The exhaust velocity of the fuel is 1.6 kilometer per second. So dm by dt is given to you as 1.6 kilo velocity. The exhaust velocity of the fuel is, students, the dm by dt is not given to you. It's velocity given to you. Relative velocity, students. The exhaust velocity of the fuel with respect to rocket दिया students, यानी VR दिया है जो constant है हमेशा, और वो कितना दिया है? It's given to you 1.6 किलोमीटर पर सेकंड. Students, इसी को अगर मुझे मीटर पर सेकंड करना है तो into 10⁻³ okay meter per second. That's your VR. Calculate the minimum rate of consumption of fuel. यानी अभी पूछा है dm by dt. Since minimum rate of consumption of fuel पूछा गया है, so that the rocket may rise from the ground. So the rocket may rise from the ground. यानी कैसे ये कंसेप्ट तुम्हारा exactly पहला वाला के हिसाब से हम लोग ने किया था. इसके पहले हम लोग ने एक प्रॉब्लम किया. तो वे dm by dt पूछा है कभी when rocket just rises from ground. Students, अगर मैं बोलूं कि rocket just rises from ground तो तुम्हें क्या इक्वेशन यूज करना है? हाँ स्टूडेंट्स, तो तुम बोलोगे सर your force of upthrust should be greater than the weight of the rocket, है ना? लेकिन हम जाते हैं greater than or equal to, बस ये दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर. फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सर VR into bracket minus dm by dt. And what exactly the weight of the rocket? Weight of the rocket क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल M आएगा, m0 आएगा, फिर यहाँ पे m0 to g आएगा. Total mass. Friends, can you solve and get the answer, students? तुम्हें dm ये नेगेटिव साइन, आंसर तुम्हें नेगेटिव में मिलेगा स्टूडेंट्स. तो dm by dt क्या होगा? You will get your answer in negative. This will be minus m0 into g upon VR. Students, नेगेटिव साइन ये बताता है कि it is getting ejected. The gas is getting ejected, which helps in proportion. Students, try to get the answer for this. क्या आंसर आ रहा है देखो? dm by dt क्या आ रहा है फर्स्ट केस में? Students, are you all understanding? In first case, it's coming as 1.225 kg per second. Very good. Answer is correct. ये होगा minus 1.225 kilogram per second. Students, that's the correct answer. अभी सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स. Also calculate, क्या पूछा उन्होंने? Also calculate the ultimate vertical speed. यानी स्टूडेंट्स अभी सेकंड केस में पूछा v पूछा गया है. Friends, find out the ultimate vertical speed gained by the rocket when the rate of consumption of fuel is. अभी देखो उन्होंने g को 9.8 लेने के लिए बोला है. Okay. Students, find out the velocity v if the rate of consumption of the fuel. अभी देखो यहाँ पे दो केसेस मिल गया स्टूडेंट्स. रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल यानी पहला केस में और सेकंड केस, यानी दो दफे तुम्हें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट v. पहले केस में कंजम्पशन कितना दिया फ्यूल का? dm by dt is given to us 2 किलोग्राम पर सेकंड, यानी 2 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है 1 सेकंड में. और दूसरे केस में dm by dt कितना दिया है? 20 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है 1 सेकंड में. स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क क्या है? 10 टाइम्स, एक मल्टीपल ऑफ 10. यानी स्टूडेंट तुम एक आंसर फाइंड आउट करे, सेकंड केस के अंदर तुम्हें फैक्टर 10 का प्ले करेगा, बस you'll get answer almost equal and 10 का फर्क गिरेगा. Is it clear, students? Find out the velocity of the rocket when the rate of consumption of the fuel dm by dt is 2 kilogram per second. In the first case and second case, 20 kilogram per second. Now can you solve and get the answer, students? इसके पहले स्टूडेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, dm by dt वहां पे भी दिया था. तो स्टूडेंट्स उससे मैंने क्या फाइंड आउट किया था?
2 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है 1 सेकेंड में। तुम्हारे पास कितना फ्यूल था रॉकेट के अंदर जब भी तुमने शुरुआत की, जब भी तुमने रॉकेट को लॉन्च करना चाहा, तो उस टाइम पे व्हाट वाज द टोटल मास ऑफ द फ्यूल? सर मास ऑफ द रॉकेट वाज 20, टोटल मास ऑफ द रॉकेट इज 200, हाउ मच वाज द मास ऑफ द फ्यूल? 180 kilograms। आया ना स्टूडेंट्स? अभी अगर मैं पहला केस लूं स्टूडेंट्स, अगर 1 सेकेंड के अंदर 2 किलोग्राम का फ्यूल बर्न होता है, तो कितने टाइम में ये देखो, हाउ मच इज द मास ऑफ द फ्यूल? मास ऑफ फ्यूल इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट योर मोशन कितना है? 180 किलोग्राम है। एग्रीड? तो 180 किलोग्राम के लिए कितना टाइम लगेगा फ्यूल को बर्न करने के लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तुम्हें वी चाहिए, तो वी के अंदर तुम्हारा फॉर्मूला आता है ना टी। कुछ याद आ रहा है वी का फॉर्मूला क्या है? V is equal to U minus GT plus VR ln M0 by M। ये फॉर्मूला अभी रात को भी तुम्हें याद रखना, अगर किसी ने 3 बजे भी उठा के पूछा तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला, यू कैन फॉरगेट दैट। तो तुम्हें टी चाहिए ना, तो स्टूडेंट्स 180 किलोग्राम के लिए हाउ मच इज द टोटल टाइम गिवन? सो 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पे कितना होगा? 90 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कितना होगा? 9 सेकेंड्स होगा। पर देखो 10 का आ गया मल्टीपल। Agree students? Know what is the formula? Formula for V is equal to what? U minus GT plus relative velocity of exhaust with respect to rocket, that is VR, और ये हमेशा constant होता है, ln of M0 by M। M0 is the total mass of the rocket. M is only mass of the rocket, not considering the fuel. When the rocket is initially starting, the rocket just rises from ground. If I say just rises from ground, what exactly its initial velocity? I'll take it as 0. तो u को मैं क्या लूंगा? 0। क्या मुझे g पता है? हाँ सर g दिया हुआ है। क्या मुझे t पता है? हाँ सर t मालूम है। क्या मुझे vr दिया गया? हाँ सर vr मुझे दिया गया है। क्या मुझे m0 मालूम है? हाँ सर m0 मालूम है। क्या मुझे m मालूम है? हाँ सर m मालूम है। कैन आई सॉल्व टू फाइंड आउट v? हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा? 20 किलोग्राम्स पर सेकेंड, तो ये 9 सेकेंड आएगा। तो सिर्फ t को क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना, और एक इक्वेशन वो है, लेकिन 9 से ये टर्म पूरा सेम रहेगा स्टूडेंट्स। माइनस 9.8 इंटू टी कितना होगा? 9। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। प्लीज सॉल्व एंड गेट द आंसर्स। दोनों का वेलोसिटीज निकाल के बताओ स्टूडेंट्स, एंड आई वांट द सर आंसर्स आई टू हैव बी गिवन द आंसर। 2.8 and 3.6. Absolutely correct students, 2.8 and 3.6. Nearly has got it. 2.8 kilometers per second is the velocity. In second case, my velocity is given to how much? It's actually 3.595, which can be written as 3.6. ये तो आंसर आना चाहिए तुम्हें। Hope it's clear to all of you all. So there were 2 sub questions given to you. पहले केस में टाइम कितना, पहले केस में रेट ऑफ कंजम्पशन कितना दिया था? 2 किलोग्राम्स पर सेकंड, और सेकंड केस में कितना दिया था? 20। तो जब देखो यहाँ पे ये लॉन है, ये इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? ये m0 कितना है सर? m0 200 है। ये कितना हुआ? 20 हुआ। तो देखो वापस 10 आ गया ना स्टूडेंट्स। ये देखो ln 10 को, यानी जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो प्लस हाउ मच इज vr? ये आएगा स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये मीटर्स पर सेकंड में। स्टूडेंट्स ये मीटर्स पर सेकंड में करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये तुम्हें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है ना, ये सेकंड में दिया है। बाद में तुम उसको कन्वर्ट करना ना किलोमीटर्स में। स्टूडेंट जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको तुम किलोमीटर्स में नहीं लग सकते हो। वीआर को किलोमीटर्स में मत रखना स्टूडेंट्स, उसको पहले मीटर पर सेकंड में करो, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसको तुम डिवाइड बाय 1000 कर दो। मीटर टू किलोमीटर डिवाइड बाय 1000, किलोमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। होप दैट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल। नाउ ln है तो ये कितना होगा? 2.303 log ऑफ 200 माइनस log ऑफ 20। अगर मैं 200 अपॉन 20 भी लेता हूँ तो ये क्या होगा? log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ 10।
which is equal to 1. ये पूरा 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स. मल्टीप्लाई करो, उसको GT से सब्ट्रैक्ट कर दो. You get this answer. Smith, are you there, Smith? Yes, sir. Are you solving second and third now? Yes, sir. I'm solving the second one. Page number 122. ये तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मिलेगा क्योंकि एक्सप्रेशन दिया है. उन्होंने बोला है नो नीड टू सॉल्व द एंटायर इक्वेशन. सॉल्व होगा भी नहीं क्योंकि कुछ वैल्यूज दिया नहीं है पूरा. स्टूडेंट्स, कैन आई इरेज दिस? स्टूडेंट्स, इसको इरेज करो. मैं Yes, sir. स्मिथ, तेरे को पता चल गया. तू तेरे साथ में अगर फिजिक्स करने बैठे तो तेरा पोर्शन शायद बहुत जल्दी हो जाए अकेले के साथ में. इज इट? है ना स्मिथ? हाँ स्मिथ. Not sure. नॉट श्योर. लेकिन ये ध्यान में रखना, गो ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस टॉपिक स्टूडेंट्स, क्योंकि इट्स अ 2.5 years का प्रोसेस स्टूडेंट. जैसे जैसे तुम आगे जाओगे पीछे का भूलना नहीं. एक कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहो. पुट अ रेड डॉट इन फ्रंट ऑफ गुड concepts in that case and try to revise those problems again and again students. Don't just try to forget things. ये एक्चुअल टैलेंट तुम्हारा पता चलेगा जब भी तुम्हारे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते हैं. उस टाइम पे तुम कितना स्कोर करते हो वो मैटर करता है. Ashmita, can I erase it? Yes, sir. Are you getting the answers or not? Ashmita? Yes, I'm getting. Let's go to the second and third one. The rest of you, please. Yes, anybody getting the answer? Yes, anybody?
Since the question speaks about a rocket is moving vertically upwards against gravity, its mass at time t is. Since उसका mass है at time t, and some part of the fuel is have burnt out in that case. So it has a mass at time t, which is given as small m is equal to m0 minus mu into t, and mu is a constant. Okay. Mass at time t is m is equal to m0 minus mu into t. Okay. And it expels burnt fuel at a speed of u vertically downwards. Okay, so relative velocity is given to you as u. Students, VR को u लेना है तुम्हें. Vertically downwards related to the rocket. Derive the equation of motion of the rocket, but do not solve it. Okay, you have to derive the equation of motion of rocket, and you need to find out v ka equation. But you don't have to solve it. That's all. And mu is constant, students. Mu is given to you as constant. Who's this Soham Kantharia? Who's this Soham Kantharia? New student? All students? No, sir. You know not the Soham. Pardon? So you know not the student. Like you always take his name. Like Soham, are you there in the lectures? Ha. He's the same guy. Yes, sir. So वापस चला गया देखो. Ria, when he spoke about him, he went away. Ria, he got to you. Sir, I just told you because you asked. Okay. Oh my God. कैसे चला गया देखो. Oh my God. Okay, fine. Ria, you're very smart. You get shy. Okay. रिया बहुत स्मार्ट है. रिया तेरे को समझ, तू इसके लिए तुरंत बोलिया, लेकिन मैं कब से बोल रहा हूँ प्रॉब्लम समझ में आया, तभी तो आंसर नहीं देती है रिया. नहीं सर, समझ में आ रहा है और मैं कर भी रही हूँ. Okay, fine, good. लेकिन this is nice one, huh? You said it, sir. You know him, and he went off instantly. He removed himself. बेचारा कुछ तो सीखने के लिए आया था, तुम लोग रिया तूने उसको भगा दिया. Very bad. Very bad, Riya. You should not do like that for somebody who's coming to learn. Sir, I didn't do anything like that. No, you did it. You did it. Come on. Answer. Swapnil, Mayur, Mayank, Riya, Ashwita, Smith. Smith, कुछ समझ में आ रहा है? So in this term, I'm didn't getting the answer. अभी देख जाते देखना. तेरे को क्या पूछा है? Velocity पूछा है ना students? Students क्या पूछा है? Velocity is been asked, है ना? अगर velocity पूछा है, तो how do you go about for the velocity? Velocity का equation तुम्हें पता है? तुम बोलेगे हाँ sir, the velocity का equation is equal to what? It's u minus gt. If in case if I write out the equation, students, so velocity is equal to u minus gt plus vr, है ना? It's a relative velocity. ln m0 by m. ये तुम्हारा equation है, हमें v चाहिए. Agreed? Initial mass and the final mass तुम्हारा है, ये तुम्हारा initial mass होगा और ये final mass है. Mu is constant. I wanted simply an equation, students, and in at time t. So students, when you look at this equation, first of all, can I get the equation for rate of change of velocity, students, and then I can go for integration? Why not? You can go for that. Simply, you can go for that. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जब तुम सॉल्व करो ना, तुम्हें v पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स तुम्हें v
we can get it in terms of what differentiation के हिसाब से होगा। स्टूडेंट तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ये तुम्हारा इक्वेशन, लेकिन तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें ये बोला गया है कि सॉल्व मत करो। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर तुम स्टेटमेंट रीड करते हो और रॉकेट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, इट्स मास इन टाइम t is and it expels a burn gas, derive an equation of motion for the rocket and then solve it. Students, for a rocket to propel in the upward direction, and the answer is na, if it's going with a certain velocity. Students, मुझे ये बताओ, what is the net force required? तो तुम बोलोगे force of upthrust minus the weight. हाँ students, हमें ये इक्वेशन लेना पड़ेगा आफ्टर सर्टेन टाइम पूछा है तो। फ्रेंड्स क्या ये क्लियर हुआ? नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट माइनस वेट होगा। व्हाट इज नेट फोर्स? द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन तो तुम dv by dt ले चलो, क्योंकि तुम्हें वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए ना, तो हम डिराइव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो m into a अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता हो जाएगा, vr into bracket minus dm by dt minus weight. Weight is equal to what we consider as it's m into g. Agreed? What does m given to you? Students, what does the m stands for? M stands for the mass at time t. Students, ये जो m है वो ये वाला m है students. After time t, students, what exactly the mass of the rocket will be m, and how much is this m is? ये part तो कहना है, substitute this m back over here. तो देखो m0 minus mu t into acceleration net is equal to relative velocity minus dm by dt minus, instead of m, can I substitute this as m0 minus mu t into g? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इसको डिनोमिनेटर में ले लो स्टूडेंट्स, तुम यू कैन टेक देम इनटू डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे भी तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स। vr क्या है सर? vr मेरा u है, माइनस, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, dm by dt। एग्रीड? कैन आई टेक दिस इन द डिनोमिनेटर? यस। ये देखो ना, vr की जगह पे मैंने क्या लिखा है? u माइनस dm by dt, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस, सर ये अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस g। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? यस सर। मुझे क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये पूछा है दैट हाँ, if it expels a burn fuel as a speed u vertical downwards related rocket, derive the equation of motion of rocket. Derive the equation of motion of rocket. That means I need to find out velocity of rocket at that time t. यानी मुझे dv by dt पूछा बस। अभी देखो तुम्हारे यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है? dm by dt आ रहा है, यानी मास ऑफ फ्यूल बर्न। उसको तुम कैसे निकालोगे? उसको तुम कैसे निकालोगे? सर सिंपल ना, आपके हाथ में ये इक्वेशन दिया है ना सर, ऐसा करते ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो dm by dt, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो स्टूडेंट व्हाट एक्चुअली dm by dt क्या आ जाएगा? सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। सर माइनस म्यू कांस्टेंट आ जाएगा, dt by dt will get cancelled. So what is dm by dt minus mu? Can I substitute back over here? So dv by dt is equal to, the answer है students, it's minus mu. dm by dt is minus mu. Minus into minus will be plus. So u into mu upon m0 minus mu t minus g. क्या ये क्लियर हुआ? ये तुम्हारा आंसर हुआ। अगर तुम्हें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि उन्होंने आगे सॉल्व करने नहीं बोला, तो dt इस तरफ ले लो तुम। टेक dt हो भैया, I getting it? And then we'll try to go for integration अगर तुम्हें velocity दी है। Students, क्या ये क्लियर हुआ? Find out the velocity at the time instant. तो dv by dt is equal to
रिलेटिव वेलोसिटी VR को मैंने u ले लिया, m0 माइनस म्यू as it is ले लिया, dm by dt कैसा मिला, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dm by dt m0 cannot be differentiated because it's a constant, माइनस म्यू बाहर आ जाएगा, म्यू इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएटिंग टाइम विल बी dt by dt will be equal to 1, तो ये माइनस म्यू हो गया, तो ये माइनस म्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस minus g, and that becomes your answer. So now read the question once again, students. A rocket is moving vertically upwards against gravity. Its mass at time t. Its mass at time t is expressed as m0 minus mu into t. If I differentiate this mass with this time, I'm getting simply minus mu. And it expels a burn fuel at a speed of u. So VR is equal to u, students. Mu is constant. Derive the equation of motion. Derive the equation of motion. Rate of change of velocity. Students, derive the equation of motion of the rocket, but do not solve it. Do not solve it. Here, mu is constant. Mu is constant. क्या ये clear हुआ सबको? हाँ, students? Yes, sir. Students, rest of you all. स्वप्निल clear है? स्वप्निल, तुम लोग आंसर नहीं देते हो स्वप्निल? मयूर, माया, नहीं समझ, बिंदास पूछो प्लीज. Don't just restrict yourself to that. And this was simply in form of equation पूछा है students तुमने. Ashmita, is it clear? Riya, is it clear? Yes, sir. Yes, sir, clear. Can I erase this? अभी मैं इसको erase कर सकता हूँ. अभी इसमें तेरे को वापस जब भी प्रैक्टिस करना हो ना, तो ये सेकंड प्रॉब्लम को तेरे को सर्कल करके रखना है. यानी जब भी तू प्रैक्टिस करेगा तो सर्कल सेकंड क्वेश्चन वापस करना है आफ्टर 15. रसगुल्ला. क्या बात है जीत. जीत क्या बोला तो? व्हाट एग्जैक्टली सेड जीत? हाँ जीत थक गया लगता है. जीत थक गया है ना. टायर्ड, बहुत पढ़ाई की. जीत के ना इरेज दिस. जीत इसको इरेज कर दो. हाँ जीत, आर यू देयर? जीत, shall I erase it? रसगुल्ला जो लक्ष्मा मिळेल मम्मी जीत having रसगुल्ला. नहीं खाए तो मुंबई कौन जा सकता? It's या तार पप्पा ने जाओ तो तीन तार पप्पा ने तार क्या ले समझ में आ रहा है? तार पप्पा लावे लाना पड़े थे. तार पप्पा कपड़ा लावे जाते ये पप्पा के घर में. Jeet is the most intelligent boy of the class, Borivali branch. Students, erase कर दो अभी मैं. Can I erase it, students? yes, sir. Students, can I? Okay, fine. So please go to the next one, students. Third one. Now, students, try to get the third question by yourself properly. स्मिथ मिला थर्ड वाला? नहीं सर, अभी फाइंड कर रहा हूँ. Okay. Students, question is given to you that is a rocket of initial mass m0 or the mass has mass m0 into bracket 1 minus c by 3 at time t. And students, वो m हो जाएगा at a certain instant. Okay, at a certain time. और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v हम ले सकते हैं. The rocket is launched from rest. So initial velocity 0 दिया है students, u is 0. And equation में अगर तुम v is equal to u लिखते हो तो वो 0 हो जाएगा u. Initially from rest vertically upwards under gravity and expels a burnt fuel at the speed of u relative to the rocket. यानी vr दिया है u.
Students, find the speed of the rocket at time t equal to 1 second. यानी तुम्हें v पूछा है in time t equal to 1 second. तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? v is equal to u minus gt plus vr ln m0 by m. अभी तुम्हें m0 पता है और m पता है, बस हो गया, डाल दो. स्टूडेंट्स ये सबको आना चाहिए. प्लीज नाउ यू शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ fuss for this. Even Jeet should be able to answer for this. Yes, anybody? Smith Miller. Students, देखो ना, simple है students. Third वाला, what is the mass of the rocket is m0. Are you getting it? Initially हम m0 लेते हैं at time t equal to 0 seconds. और initially it is at rest, so u equal to 0. फिर उन्होंने क्या बोला है? A rocket of initial mass m0 has a mass. Has a mass. So what exactly the mass of the rocket is? m0 into bracket 1 minus t by 3. कभी जब भी रॉकेट प्रोपेल करता है तो एट अ टाइम t, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v, जो तुम्हें पूछा गया है, और टाइम कितना दिया है? एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड पूछा है. बस खत्म हो गया ना बात स्टूडेंट्स. दे हैव गिवन टू यू इज व्हाट? द रिलेटिव वेलोसिटी vr कितना दिया है स्टूडेंट्स? vr is given to us u. Okay, what is going to find the speed of the rocket in time t equal to 1 second. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला नहीं, v का फॉर्मूला नहीं पता. v is equal to u minus gt plus vr ln m0 by m. स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, ये Sir, फॉर्मूला is the नहीं. answer Is the answer? u ln 3/2 minus g? Absolutely correct. प्रॉपर. स्टूडेंट्स अभी देखो, यहाँ पे देखो, v पूछा है. इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको मैं 0 लूंगा. माइनस g, सपोज अगर मैं g को मैं सॉल्व करूंगा तो 9.8 इन टाइम 1 सेकेंड, प्लस व्हाट इज vr इज गिवन टू यू? हाउ मच इज vr इज गिवन टू यू एज u, जो मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, इनटू ln m0 कितना है सर? m0 इज एज इट इज. m को क्या लिखूंगा मैं? m0 into bracket 1 minus t by 3 bracket close. At time ये t है स्टूडेंट्स. at time t equal to 1 second अभी मैंने डालना है. मैंने यहाँ पे 1 second डाल दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 1 second डालना है तुम्हें, इसलिए मैं t में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये m0 कैंसिल हो जाएगा. तो देखो v is equal to minus 9.8 into 1 plus u ln 1 upon 1 minus t को 1 second ले रहा हूँ 1 by 3. फ्रेंड्स अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? 1 minus 1 by 3 कितना होगा? 3 minus 1 by 3 यानी 2 by 3 यानी 3 by 2 हो जाएगा. तो v is equal to minus 9.8 plus u multiply by ln, ये क्या हो जाएगा? 3 by 2. बस. अगर तुम्हें ln में आंसर नहीं लिख रहा तो कैन यू राइट एन लॉगरिथम? व्हाई नॉट? नेचुरल लॉग के अंदर तो v minus 9.8
प्लस यू, ये ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं कैसे लूंगा 2.303 लॉग ऑफ, अभी देखो ध्यान से देखो, या तो मैं ब्रैकेट में log of 3 माइनस log of 2, अगर तुम्हें ये दोनों वैल्यूज पता है स्टूडेंट्स, इसलिए बोलता हूँ ये जब ये एमसीक्यूज करोगे ना स्टूडेंट्स, जब ये रॉकेट केस, स्वप्निल, मयूर, मांग, अश्विता, रिया, Smith, those students who are answering and those who are regularly thinking about it, students at least try to remember from the log books, log of 2, log of 3, log of 4, log of 5. ये basic values तुम ध्यान में रखना students, याद रखना. या तो तुम directly log of 3 by 2 is log of 1.5 to the base of 10. यानी तुम्हें ये natural logarithms में देखना है, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना है. अगर तुम्हें इनिशियल स्पीड दी है तो वो मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 9.8 से सब्ट्रैक्ट करोगे, एंड दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर फॉर मीटर पर सेकंड. So this becomes your formula. Is this clear? Yes, sir. Rest of them. Mayur, Mayank, clear है? Mayur? Yes, sir. Okay. Ashmita? Yes, sir. Okay. What about you, Riya? देखा रिया भाग गई, देखा रिया नहीं है, she is left. This is what the problem with the students is, है ना? Okay, can I erase it, students? Erase कर दूं मैं? Yes, sir. Okay. So these are the questions related to your propulsion of rocket, students. So do keep in mind, students, the formulas also. The next concept, students, it's an easy concept coming. और शायद तुम लोग ने ये पढ़ा भी है, students. And under laws of motion तुम लोग ने पढ़ा है. Concept of impulse. Students, why am I picking up impulse? मैं impulse का concept में क्यों पकड़ रहा हूँ, students? Because we are trying to go for after, इसके बाद में हम जो बड़ा सा पार्ट हम students, अभी ये चैप्टर में तुम देखोगे ना students, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर, तो तुम्हें ज्यादा करके किसके ऊपर फोकस करना पड़ता है स्टूडेंट्स? ये जो रॉकेट प्रपोल्शन है, इम्पल्स के कंसेप्ट है, वो सारे तुम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे जब भी तुम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर पढ़ते हो स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट स्टूडेंट्स. Then the terms associated with center of mass during body undergoing motion, velocity of center of mass, acceleration of center of mass, momentum of center of mass, force of center of mass. That is what it's very important. और इसके बाद में जो लास्ट पार्ट आता है वो collisions के बारे में आता है, head on collisions and oblique collisions, students. That is more important for this particular system of particles. लेकिन collisions को समझने के लिए, impact को समझने के लिए, first of all a student should know about impulse, okay, which already have learned under laws of motion, students. Now if you happen to consider your Newton's second law of motion, students, what exactly you learned it, students? Your force is directly proportional to, students, rate of change of momentum. Agreed. The force we can write down simply in mass in terms of acceleration, students. Okay. And when we speak about it, what exactly force we can consider, students? It's simply we take it as a rate of change of momentum we consider. I getting it? Can ये F होगा और acceleration को अगर मैं लिखूँ, students, rate of change of velocity में लिखता हूँ dv by dt, students. Agreed. तो ये देखो, ये जो force है into dt is equal to m into dv, students. Am I getting it? If in case if I happen to consider, students, इसको अगर मैं simply मैं integrate करता हूँ, जहाँ पे मैं limits लूँगा 0 to t, यहाँ पे मैं integrate करूँगा dv को u to v, final minus initial. तो students तुम्हारा f constant जो बाहर आता है, agreed. What is integration of dt will be simply t, force into time. ये क्या होगा? Mass constant होगा. Integration of dv क्या होगा? v, जिसमें मैं लिखूंगा final minus initial. So जब भी तुम इसको देखोगे तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ये जो product of force into time है, that is called as impulse. So what is exactly impulse? Is simply we consider, simply impulse is considers what? Change
in momentum. What does m into v consider? Students, it's final momentum. Minus m into u is called as what? Initial momentum. This change in momentum is called as impulse. And impulse is denoted by variable, students, j bar. Variable j stands for impulse. It's a vector quantity. इसका यूनिट क्या होगा? सर इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स. तभी जाके स्टूडेंट्स इम्पल्स को जब भी डिफाइन करते तो इम्पल्स क्या है? स्टूडेंट्स इम्पल्स इज दैट मैक्सिमम फोर्स. Is that maximum force acting on a body for a very short interval of time. Very short interval. तभी जाके उसको डेल्टा टी में लिखते हैं या dt में लिखते हैं स्टूडेंट्स. It's a very short time, very short time we consider, time instant we consider. So it is that maximum force which acts for a very short interval of time is simply called as impulse, and impulse is a vector quantity. Students, is this clear? Using second law of motion, force is equal to mass into acceleration. Acceleration को मैंने कैसे किया है? Rate of change of velocity ले दिया students. I've taken dt on either side and going for integration on both the sides. Force applied, we consider I'm giving a constant, integration of dt will be t. यहाँ पे मैंने लिमिट्स डाल दिया तो मुझे चेंज इन मोमेंटम मिला. ये f into t जो मिलता है इसको मैं बोलूंगा इम्पल्स. यानी स्टूडेंट्स जब भी इम्पल्स में फाइंड आउट करना तो या तो तुम चेंज इन मोमेंटम करो या f into टाइम ले लो स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. So normally f into t can be written in terms of change in momentum. Now students यहाँ पे जब भी तुम देखोगे तो एक simple explanation दे रहा हूँ students, एक simple example दे रहा हूँ मैं. I get. Now for example, a certain person who's running for a long jump. Students, एक sport athlete है students जो long jump के लिए भाग रहा है students. Is running for a long jump, okay? He's running for long jump. Now, when he's running for long jump, students, this is the benchmark. He takes a huge leap at the benchmark. वो jump करता है यहाँ से. लेकिन जैसे वो नीचे देखता है तो क्या है? Concrete surface है, students. Surface concrete है. तो concrete surface से होगा क्या? Can I say he's going to hit the surface very hard? So what about the impact? Students, it is the impact which is maximum. Force is maximum, but that impact is for a very short interval of time. Students, when it's hitting the surface, the time of contact is very small. Force of impact is very large. Impulse remains constant. Please, students, everyone listen carefully. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स. यानी अगर तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम है तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी स्मॉल. Then only you can have force to be maximum. Then यहाँ पे concrete surfaces, the time of contact is very small, तभी जाके force ज़्यादा लगा. अभी तुम देखो students, long jump जब भी कोई करता है athletics के अंदर, hope you know what is long jump. जब भी वो jump मारता है students, so don't you think so यहाँ पे sand का cushion होता है students. एक cushion होता है sand का, पूरा एक pit ऐसा develop करते हैं जहाँ पे पूरा sand भरा हुआ रहता है. And now the person is landing into sand. और जब भी वो sand के ऊपर land करेगा तो what is going to happen students? उसका time of impact बढ़ता है. जैसे वो contact में आएगा तो he is coming in contact with the body, but वो that person will slightly enter more into the sand. यानी हो क्या रहा है students? F is inversely proportionality. अगर time of impact बढ़ा, okay, so what about the force of impact? The force of impact कम हो जाएगा, तभी जाके sand लगाते हैं. तो लॉन्ग जंप के अंदर कंक्रीट सरफेस नहीं होते हुए सैंड लगाने से होगा क्या? सर सैंड लगाने से टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम होगा, इंजरी कम होगी. सेम थिंग स्टूडेंट्स, शायद तुम लोगों ने गेम ऑफ क्रिकेट में देखा होगा, व्हिच मेनी स्टूडेंट्स लव टू सी क्रिकेट. अभी अंडर 19 का चल रहा है स्टूडेंट्स. अंडर 19 का वेरी गुड बॉलर इज कमिंग अपराइट स्टूडेंट्स. अ वेरी गुड बॉलर इज कमिंग अपराइट. अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है स्टूडेंट्स. यस्टरडे आई डू फील सो वी वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो अबाउट इट. लेकिन अंडर 19 का वर्ल्ड कप के अंदर स्टूडेंट्स साउथ अफ्रीका का वेरी गुड बॉलर रबाड़ा के जैसे ही है, एंड ही बोल्स ऑसम. ही बोल्स वेरी वेरी ऑसम. द वे ही बोल्स he mesmerizes the batsman in that case. अंडर 19 का
स्टूडेंट्स अगर तुम देखोगे गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर भी इम्पल्स का है, द क्रिकेट बॉल इज सो हार्ड इनफ। स्टूडेंट्स अगर तुम्हें कैच पकड़ना है तो उस टाइम पे अगर तुमने कैच पकड़ा तो यू टेक योर हैंड्स बैकवर्ड। स्टूडेंट्स very few students, very few cricketers are trained to hold the ball firmly and do not take the hand backwards. स्टूडेंट्स जब भी बॉल इम्पैक्ट करेगा तो वो बार पॉप अप नहीं होना चाहिए, बार वापस नहीं आना चाहिए। तो बाहर नहीं आने के लिए क्या बढ़ाते हैं, वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाते हैं, यानी वो बॉल को पीछे की तरफ लेते हैं। तो जितना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा उतना फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट कम होगा तो रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, और वो बॉल बाहर नहीं आता। दैट इज व्हाई द क्रिकेटर्स टेक्स द हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल टेकिंग अ कैच एट द बाउंड्री लाइंस एंड अ क्रिकेट बॉल इज हार्ड। Students, do you know the only fielder? Students, do you know the only fielder who was a kind of a live wire in a cricket ground? Anybody knows it? The only fielder who was a live wire in a cricket ground who used to hold the ball firmly. Students, उसको पीछे हाथ लेने की जरूरत थी, उसका हाथ इतना strong था कि बॉल वो एक हाथ में भी ऐसा पकड़ लेता है. With a high speed, he could catch the ball without taking the hand backwards. Students, anybody? No, जॉन्टी रोड्स. अगर तुम्हें टाइम मिले स्टूडेंट्स, एक दफे जॉन्टी रोड्स की सीरीज देखना स्टूडेंट्स. ओके, जॉन्टी रोड्स का सीरीज देखना यूट्यूब के ऊपर या उसके लाइव वीडियोस देखना स्टूडेंट्स. All sorts of, and you will come to know, you'll enjoy it. He was like a live wire and his placement was at point and at covers most of the times. पूरे मैच में स्टूडेंट्स, पूरे मैच में वो हमेशा 20 से 25 रन कम करवाता. People used to get scared from him. They should never run अगर उसके हाथ पे बॉल आया. And अगर वो 10 times वो अगर थ्रो करता था on the stumps, 10 on 10 के अंदर he was bullseye. And he is now the trainee of Mumbai Indians also. Okay, ये तुम्हारा impulse के बारे में students. Hope I do know I have gone out of track in that case. Coming back to track students, ये impulse का concept हुआ. Okay, it is that maximum force acting for a short interval of time. क्या मैं इसको erase कर दूं students? Students? Yes, sir. Yes, sir. अगर कभी भी फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को कम करना है ना स्टूडेंट्स, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाओ. Okay. Students, ये जो तुम्हारा force है, force is what? Students, force is simply rate of change of momentum. Students, force is simply considered as dp by dt. और ये तुम्हें कहाँ पे मिलता है students? Newton's second law of motion. A large change in momentum can create a very good amount of impact students, and that's how it causes destruction. Students, अगर किसी ने पूछा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक सिंपल एग्जांपल, तो तुम बोल सकते हो storm causes destruction. यानी स्टॉर्म करता क्या है सर? एक लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट क्रिएट करता है, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट करता है, और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है. हाउ इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट, जब भी तुम स्टॉर्म को देखते हो स्टूडेंट्स, जब भी तुम स्टॉर्म देखते हो, व्हाट अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स? है ना, स्टॉर्म इज एक्चुअली व्हाट? डस्ट पार्टिकल्स. ईच डस्ट पार्टिकल का मास बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा होता है, यानी मास इज डीएम. ये जो डस्ट पार्टिकल है, इट्स गोइंग विद अ वेरी हाई स्पीड स्टूडेंट्स. इट्स स्पीड इज 80, 100, 120, 200 kilometers per students. Its speed is very large speed it's going with it. Storms के टाइम पे होता है क्या स्टूडेंट्स? ये सारे मासेस को तुम एक साथ में लेते हो, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम? क्या बन जाएगा? कैपिटल एम बन गया. ये पूरा मास क्या वेलोसिटी से जा रहा है? v से जा रहा है. एग्रीड? यानी उसका इनिशियल मोमेंटम स्टूडेंट्स, इसका इनिशियल मोमेंटम कहने से इट्स वेरी लार्ज. हाँ सर. अभी नाउ फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन क्यों करता है? बिकॉज व्हेन इट ट्राइज टू हिट, when it try to hit a particular object, what happens? This particular velocity which is very large is suddenly, यानी ये initial velocity है students, the gas molecules are going with very high initial velocity,
जब ये impact होता है, when they strike it, what happens to the final velocity? Becomes 0. प्लीज ध्यान से देखना, ये पूरा जो storm है, molecules है, उनका total mass is capital M, लेकिन उनकी final velocity is brought to 0. Students, initial very large, final 0. What is the time taken for this to reach to 0? Time taken for this to reach to 0, sir, it's very, very small. समझ में आ रहा है? And students, in a very small interval of time, there is a large change in velocity, keeping mass constant. Thereby, there is a large amount of force, and that causes destruction. दूसरी बात, जब भी तुम देखोगे ना storms के अंदर students, तुम्हारा rooftop blown away होता है, blow हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी तुम देखोगे ना घर के रूफटॉप्स वगैरह उड़ जाते हैं, पूरा चीज हरिकेन्स आता है, या वी कंसीडर दोस काइंड ऑफ व्हिर्लविंड्स. व्हाई इज इट सो दे ब्लो अवे? क्योंकि स्टूडेंट्स ऊपर जो एयर जाता है, इट गोज विद वेरी हाई स्पीड. तो ध्यान से सुनना, ऊपर का जो एयर जाता है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है. अंदर घर के अंदर जो एयर है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट गोइंग विद वेरी हाई वेलोसिटी. प्लीज ध्यान से सुनना, जहां पे एयर का स्पीड ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और जहां पे एयर का स्पीड कम है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है. और ये जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है ना, डिफरेंस इन प्रेशर, उसकी वजह से ये रूफटॉप उड़ जाता है. स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म, स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म एयरक्राफ्ट के अंदर की जाती है. फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट को जो टेक ऑफ मिलता है ना, लिफ्ट, वो किसके मिलता है? थ्रस्ट किससे मिलता है? फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट की जो विंग्स है, दे आर वेरी ब्रॉड. जब भी एयरक्राफ्ट रनवे पे जाता है, इट्स गोइंग विद अ वेरी हाई स्पीड, तो विंड सामने से आती है. फ्रेंड्स, जो विंग्स होते हैं, ये विंग है, विंग्स के ऊपर, फ्रेंड्स विंग्स के ऊपर द एयर इज गोइंग विद वेरी हाई स्पीड. द एयर इज गोइंग विद वेरी हाई स्पीड ऊपर से. जब भी एयरक्राफ्ट इस तरफ जाता है मोशन में, wind goes in the opposite direction. Yani the air above the wing is very high speed, but the air below the wing is at a lesser speed. तो ऊपर तुम्हें ज्यादा स्पीड मिल रही है, नीचे कम स्पीड मिल रही है. तो ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है. डिफरेंस इन प्रेशर गिव्स यू अ थ्रस्ट. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो पूरे रॉकेट को ऊपर की तरफ प्रोपेल कराता है. फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट तुम्हारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, बर्नौलीज प्रिंसिपल में आ गया. लेकिन ये तुम कहाँ पे समझते हो स्टूडेंट्स? टू अंडरस्टैंड योर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेयर योर इम्पैक्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फ्रॉम चेंज इन मोमेंटम सिंपली वी कंसीडर इम्पल्स, एंड इट्स एट मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. एग्री स्टूडेंट्स? Yes, sir. Can I erase this, students? इसको erase कर दो. So 1 minute. और ये हमेशा हमें, चलो एक क्वेश्चन पूछो स्टूडेंट्स. स्मिथ, Mayank, I don't know about it whether you're there or not. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. स्टूडेंट्स एक रूम ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. एक रूम लिया है जहाँ पे सराउंडिंग एयर एकदम स्टेशनरी है, पिन ड्रॉप साइलेंस है. और मैंने क्या किया मालूम है? मैंने क्या किया, दो टीटी बॉल लिए, टेबल टेनिस के बॉल लिए स्टूडेंट्स. और ये दोनों टीटी बॉल को मैंने सस्पेंड किया बाय थ्रेड. ओके, दोनों के बीच में मैंने एक छोटा सा गैप रखा हुआ है, और दोनों को मैंने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से रिलीज किया. दोनों का लेंथ ऑफ द थ्रेड इज सेम स्टूडेंट्स. थ्रेड का लेंथ सेम है. दोनों जो नीचे जो बॉब है स्टूडेंट्स, दोनों का सेम मास है. दोनों को सस्पेंड करके रखा है, सेम लेंथ. आई गेटिंग इट? नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू स्टूडेंट्स? मैंने सेंटर में मैंने एयर ब्लो किया है. आई एम ब्लोइंग एयर at a very high speed in between the two balls. Okay, my question to you students, will the ball will come closer, will they go away from each other? Students, two objects, two table tennis ball or two balls which are suspended by a thread of same length, same mass, surrounding air is stationary, still there. The two balls are placed at a certain finite distance from each other. When you blow air with a high speed in between them,
will the two balls will come closer to each other or will go away from each other? So they will come closer. Very good. ये MCQ है स्टूडेंट्स, ये JEE एडवांस में पूछा गया है. नजदीक आएंगे, सबको ये फील होगा कि बाहर जाएंगे, एयर बीच में डाल दिया, हवा एकदम दूर से, तो दूर जाएंगे. नहीं, वो नजदीक आएंगे. क्यों नजदीक आएंगे? क्योंकि जैसे तुमने हवा यहाँ पे ब्लो किया विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, तो सराउंडिंग एयर स्टेशनरी है, उतना मोशन में नहीं है. कंपेरेटिवली यहाँ पे ज्यादा मोशन में है, तो यहाँ पे जहाँ पे स्पीड ज्यादा स्टूडेंट्स, वहां पे प्रेशर कम. तो यहाँ पे प्रेशर लो फील होगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा. तो डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से क्या होगा? द टू बॉल्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. Now can I erase? Yes, sir. Okay, fine. Okay, students. So we did with impulse, students, is that maximum force which is acting on a body for a very short interval of time. It's a vector quantity. तो स्टूडेंट्स जब भी इम्पल्स का कभी भी किसी ने यूनिट पूछा ना स्टूडेंट्स, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड नहीं बोलता है. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम. बट लेकिन प्रिसाइसली अगर कभी भी किसी ने इम्पल्स बोला ना स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? इम्पल्स इज जे बार. इम्पल्स इज डिफाइंड एज दैट मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये तुम्हारा डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. सिंस ये F into TA है, तभी जाके उसका यूनिट न्यूटन सेकेंड हो. तो जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो इम्पल्स के स्टूडेंट्स, तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करने का न्यूटन सेकेंड. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ F into T. Okay, students. Next lecture will be continuing further action. Okay. Bye, sir. Bye Thank bye. you, sir. Most welcome.